this particular one, we are going to discuss about the EOC, which is relating to the ethics part. So currently we are doing the ethics part, and that is what? That is the EOC. So let's decide that which is more suitable. Let's do it together. So first one is, and we have the solution for the same altogether with the reason as well. So first one is benchmark for minimally acceptable behavior of community members are. We all need to write what is the answer for the same, and afterwards we will check the same. तो जो benchmarks होते हैं for minimally acceptable behavior of community members, is it the code of ethics, the laws and regulation, or standard of conduct? So we need to decide for the same. So what is your answer? You write separately for the same, I write separately, and we will check it simultaneously after reading the question. तो जो benchmark होते हैं for minimally, जो बेंचमार्क होते हैं फॉर मिनिमली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, these are nothing but the standards of conduct. what are the standards of conduct? क्या होता है? जो बेंचमार्क होते हैं फॉर मिनिमली एक्सेप्टेड बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, जो बेंचमार्क होते हैं फॉर मिनिमली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, these are the standards of conduct. These are the standards of conduct. जो benchmark होते हैं for minimally acceptable behavior of community members are, जो benchmark होते हैं for minimally acceptable behavior of community members, these are the standards of conduct. What are the standards of conduct? क्या होते हैं? Standard of conducts are applied to specific community or societal group. जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं ये अप्लाई होते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटीज पर और सोसाइटियल ग्रुप्स पे, एंड आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर विच रिक्वायर्ड ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स. दिस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर द मिनिमली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स. जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं दे सर्व एज अ जनरल गाइड फॉर हाउ कम्युनिटी मेंबर्स शुड एक्ट. They communicate the organization values and overall expectation regarding the member behavior. So what are the standards of conduct? Standard of conducts क्या होते हैं? What are the standards of conduct? स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट जो होते हैं ये अप्लाई होते हैं टू स्पेसिफिक, जो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होते हैं दैट द सेम दे आर अप्लाई टू स्पेसिफिक कम्युनिटी पे अप्लाई होते हैं और सोसाइटियल ग्रुप, दीज आर अप्लाई होते हैं टू व्हाट, these are applied to specific communities पर अप्लाई होते हैं सोसाइटियल ग्रुप्स पे, एंड आइडेंटिफाई करते हैं दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक बिहेवियर जो कि रिक्वायर्ड है ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स पे. तो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं ये अप्लाई होते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटीज पर, सोसाइटियल ग्रुप्स पे, आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर रिक्वायर्ड ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स. दिस स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट सर्व एज अ बेंचमार्क. These standards of conduct serve as a benchmark for minimally accepted behavior of community members. The code of ethics say these serve as a general guide for how community members should act. They communicate the organization values and overall expectations regarding the members' behavior, but they do not identify the specific behavior required of community members. Law and regulations are rules of conduct defined by government and related entities about obligatory and forbidden conduct broadly applicable for individual entities under their jurisdiction. तो हम क्या बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं दे आर अप्लाई टू, ये स्पेसिफिक कम्युनिटीज पर अप्लाई होते हैं, सोसाइटियल ग्रुप्स पर अप्लाई होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक बिहेवियर रिक्वायर्ड ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स. ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं दे सर्व एज अ बेंचमार्क. So this is our the question line which says that benchmark for the minimally acceptable behavior of community members, whereas the code of ethics, तो ये जो था that is relate to the standard of conduct, whereas what are the code of ethics, these serve as a general guide. When we talk about something specific community को सर्व करते हैं societal groups, so that is the standards of conduct. When we say that there is a general guide for how community members कैसे उन्हें
For how community members should act, they communicate the organization values and overall expectation regarding the members' behavior. But they do not identify specific behavior को identify नहीं करते required of community members. Laws and regulations जो होते हैं are rules. Laws and regulations जो होते हैं वो rules of conduct है which is defined by government and related entities about the obligatory and forbidden conduct broadly applicable for individual entities under their jurisdiction. Now comes to the next one. Next one is specialized knowledge and skill, a commitment to serve others, and a shared code of ethics best characterized as specialized knowledge. हम क्या बोलते हैं that specialized specialized